Let me present my screen. Okay. Is my screen visible? So you have not shared this. Now? So let's start. We have to see minimum and maximum. Yeah. Now these are the two mode in which we can just interface the things with the 8086 minimum or the maximum mode. But before interfacing, I just want to clear thing. It's just like this one. Now interfacing means what? Yes, guys. What do you mean by interfacing? Connecting. Yeah, we have to connect the different things with the MIUI. Now, as I told, what are the all different things are that can be categorized into two. Okay, what they are? Whatever we are going to interface. Whatever we are going to interface with the MIUI, that can be categorized into two parts. It's a memory and IO. Yeah, memory and IO devices. Okay. Now what we require for interfacing, try to understand. Let me just tell you. Let's suppose this is 8086. Okay. Now, first of all, whenever I want to interface something with any other IO or a memory device, what we all need is that we need address line. Okay. We need data line or data bus, you may say bus or line, one of the same thing, and we require control line. Control line or control bus. Okay. So these are the three bus we want separately. Are you getting it? We want separate address bus, separate data bus, separate control bus. Okay, so that we can interface the things or we can interface the IO devices for the MIUI. Okay, now the thing is that yes, we are having all this line. Address line we do have, data line we do have, and as well as we do have a control line. Control line is what read, write, and all that and such IO, but they are actually for controlling. Get it? But now the problem is that we are having this line, that is fine, but they are multiplexed with the MIUI. Okay, means what that AD0 to AD15. Yeah, we do have that address as well as data line, but they are multiplexed one, they are not separate. Try to understand. Okay, so there are multiplexed one, they are not separate. And what this device wants is that what the IO and the memory device wants that I want separate address and separate data lines. Why? Because now these are the lines on which address as well as data will go. Now that MIUI knows when address is going, when data is going. Okay, but if I just interpret this particular lines to the any other peripheral, how they will know that kub data and kub address are? Getting it? So what they demand is that what other device demands is that if you want me to interface with the MIUI now, okay, then ask to the MIUI to get me these three lines or three bus. ठीक है, address लाइन मुझे separate चाहिए, data bus मुझे separate चाहिए, and control line मुझे separate चाहिए. Getting it? ठीक है, अब वो सब काम करने के लिए we need to have some different ICs. We need to have some different you may say supporting ICs that we require to just separate these lines. Ready? Now we will see that supporting IC first, and then we'll just proceed with the diagrams of minimum and maximum mode. Let's see. Now the first supporting IC is called as a latch. Now anyone knows what is the function of latch? First of all, yeah. Lock the data. Okay. Anyone else who knows how does latch operate? What is the function of latch?
बस लैच कितना कितना यूज किया रहेगा आपने. What is the function of latch? Acha, let me tell you. Now, what is the function of latch? Now, these are the supporting device which we need. Okay. First of all, try to understand what we want to do is that minimum mode and maximum mode configuration है क्या चीज? Whether we want to make some system is what we want to interface something with the MUP, that is memory of the IO devices. Okay. But what is their need is that they need the address, data, and control line separately. But right now we do not have. Okay. And to make it separate, now we are going to do some, or we are going to search for some ICs. Okay. So out of that, first one is a latch. So latch IC number is 8282. What is the function of latch? Let's see. Latch is one kind of IC. Okay, which actually has got 8 input. इसको 8 input है. Okay. Then it has 2 more input as a control piece. You may say strobe and OE1. Okay. Let's try to understand what I'm doing. So what this latch requires is that OE bar means what? Output enable. Output enable. If you want to enable the output of this particular IC, so it must be grounded. Okay. So if it is a grounded means so it's always enabled. So whenever you go over here, you will get some output. Are you getting it? Okay. And now what is the function of latch? What does this latch says? Latch is actually used for demultiplexing. Latch is actually used for demultiplexing. Okay. So what it says, just give me the multiplex lines. Just give the multiplex lines and one signal who knows how to demultiplex them. Try to understand what does latch says. Okay, latch says just give me the multiplex line and one signal who knows that how to demultiplex them. Getting it? Okay. Now let's suppose in our case, in pickup case, here I will be giving AD0 to AD7. Okay, so these are the 8 lines from AD0 to AD7. These are the lines I will give to the 8 to 82. Why 8 lines? Because 8 to 8 is of 8 bit. It can just resolve 8 lines at a time, not more than 8. Okay, that one IC ka or one this 8 ka capacity is to demultiplex 8 lines. Fine. So let's suppose to this 8 to 82, I'm giving that AD0 to AD7. This lines will be given to it. And now we know who is the signal or who is responsible for resolving them or demultiplexing them. Who will demultiplex? ALE. Are you getting it? ALE. Now this is the signal who knows when the address will go, when the data will go. Or you may say this is a signal which will govern when to pass address, when to pass data. Simple. Okay. So as I told, ALE goes like this one in one Hermitian cycle. Whenever it is high, this is the high, the address will go, and whenever it is a low, the data will go. So this is the line which knows how to demultiplex them. Okay. अभी 8 to 8 क्या करता है पता है? Key, it's just like now as I told, it just demand for a multiplex lines. Getting and one signal which knows how to demultiplex it. Okay. Now what is the function of this one? Now it will just pass that first one out, means where that ALE is high. उस टाइम पे जो भी पार्ट देता है that is available at this output of this particular latch means what? After this particular operation we will get at the end of the latch is A0 to A7. Okay, and it will just block D0 to D7, which will be available from here. Because if I just pass A0, the remaining will be the D0 to D7. Are you getting it? So this is how it was earlier multiplex, that AD0 to AD7. Now I'm demultiplexing it. Address line separate kiya, data line separate. Understood? So this is how that latch works. Okay. Next IC which we are going to use is a 8286, which is the transceiver. Getting it? So how does transceiver work? Let's see. So this is all regarding 8288. We need to give that address and data line and one signal which knows to how to demultiplex. And here we will get whenever ALE is high, जो भी lines that is available at the output. And next we have to just derive from here. Let's say derive to 7. Okay. Then 8286 with the transceiver. Yeah. Now what is the use of this transceiver? Is actually nothing. But let's see. This is another IC 8286. Fine. What does it take? Just simple. It just take a data line. तो यहाँ से जो data line निकला है, D0 we have to give it to this particular IC. Is a transceiver. Fine. It will give output में भी data line. मतलब कुछ खास काम नहीं करता. Data line ही देता है. ठीक है. हाँ. It requires two signal. That is T and OE bar. Yeah. T and OE bar. It requires two signal. T and OE bar. Fine. So T is what? Transreceive. T is what? Transreceive. Means it will just tell कि मतलब data transmit करना है कि receive करना है. And OE is what is actually output enable. ठीक है.
So this is the 8286, which is the transceiver. Okay, what is its function is that is actually increase the data handling capacity, nothing else. Now I will not go in this particular IC ka working way, but just keep in mind what is this, why do we use this transceiver? It is actually used to increase the data handling capacity. It is not actually, if you see, it's a D0 D7, output is a D0 to D7, nothing else. It's not creating something extra, or it is not giving some extra lines and all, nothing. Okay, but it will just enhance the data handling capacity, nothing else. But for this, we require data lines, which are to give output will be also the data line, and to control the data, or to understand whether the data is incoming or outgoing, or you must say the read or write. Okay, we need to have the T, that is a transistor, and to this transistor from that 80 digits, I will just connect DT oblique R bar, and to this OE bar, I will connect DEN bar. I will not ground it, I will just connect DN bar. Why? Because when the DN bar is low, then only we will just deal with the data, otherwise not. So that's why to this OE bar, we just connect a DN. Okay, but here we have grounded. Try to understand. Okay, here we will not ground, we will just give a DN bar. So this 886, sorry, 8286, what I will give is that T kilon DT oblique R bar and O kilon DN bar. Fine. So now if we just increase the data handling capacity, nothing else. I will not tell much more beyond this one. So that is what is the scope of 8286. Okay, so once again, it's of 8-bit. So this is another one which we are going to use, and one more, that is, yeah, two more actually, clock generator also. 8284 and decoder. Okay, so we have to use another IC, supporting IC, that is 8284, which is called as a clock generator. Okay, which is once again same. Yeah, to this actually we have to connect crystal oscillator. We are having X1 and X2 pin for this 8284. Okay, to which we have to just connect crystal oscillator. Then here will be the two input, ready and reset, which you have to give it from the MUP, and here at the output will be having a 3 signal. Clock, ready, reset. Okay, so now this is the IC, that is 8284, which is called the clock generator. Why? Because actually we are taking two signal, ready and reset, and it's just creating 3 as a clock reset ready. So it's generating clock. Are you getting it? This is going to be the crystal oscillator. So you have to just connect crystal oscillator in X1 and X2. Okay, and we have to give the two input pin from the MUP, as the ready and reset, and khatam. It will just give the 3 output as a clock, ready, reset. Okay, so this is used for a clock generation. Getting it? Okay, and clock is very important for any digital IC. And the last one is a decoder. So here we are going to use a 3:8 decoder, which is 74138. So 3:8 decoder it is. Okay, how this IC is, you must say structure is a G1. Sorry, I forgot the pins. Yeah, G2B, G2A, and G1. Yeah, G2A bar, G2B bar, and G1. Okay, so these pins are there for enabling it. Now it's a 3:8 decoder, means what? It will have a 3 input and 8 output. Getting it? Okay, so this is one more IC we are going to use, that is a decoder, or that is 74138, that IC specific name is. Okay, now here to on this, these 3 pins are used. So what do I do is that these are the active low pins, so I will just connect to the ground. As the active high pin, I will just connect to the 5 volt, so that this IC will be turned on. Okay, and to this we will just give this 3 signal, and depending on that it will just create 8 signals. I hope you understand how does this 3:8 decoder works. Yes, everyone knows how does 3:8 decoder works. Yes. 0 Okay, 0 to so first line. yeah, let's suppose, so in here we will be having a Y0, Y1 bar, Y2 bar. This is output up to the Y7 bar. Okay, now let's suppose here my input is a 0 1 0. What will happen? 2 select होएगा Y2. Yeah, 2 select होगा, मतलब क्या? अभी active low decoder है. So if the 0 1 0 is the input, then Y2 bar will be low and everything बाकी Low. सब high जाएगा. Everything इसमें 0 को high. meaning रहेगा because ये active low decoder है. Okay, so it will just make this Y2 bar as a low and rest of the things will be the high. Understood? So this is how the decoder is used. Fine. Now let's see our main diagram. अब ये सबका यूज कैसे करने का? Let's see. Yeah, अब ये थोड़ा ह्यूज लगता है डायग्राम, बट इंपॉर्टेंट है. Is the diagram visible properly?
Yes, sir. This, yeah, okay. Now once again, what is our aim behind adding these ICs, that is a clock, then a latch, transistor, decoder? इसके पीछे aim क्या है अपना? क्यों कर रहे हैं? सेपरेट आउट करने का है मेमोरी. Yes. Now, if you want to interface them with someone else, they require separate address and separate data and separate controller. उसके लिए सब क्या बोलते हैं? सब मगजमारी चल रही है. Getting it? Okay. So how do we do that? Let's see. Now this is a very important one. How do we do this? Let's see. Now how do we arrange? We just keep on trying over here also. देखो अभी कैसे connection करना है? This diagram is important. I'm going to draw somewhat roughly, and then I'll just show in. सर वही Actually, पीडीएफ में दिखाओ ना, वही पीडीएफ में sorry, दिखाओ ना, उधर भी. sorry. हेलो सर, उसी पीडीएफ में अपन राइट भी कर सकते हैं ना यूजिंग पेन. क्या पता है इसमें? पता नहीं. ऊपर सर, हाँ. राइट में तो कुछ नहीं करने को देता है. नहीं सर, तो इजी पड़ेगा ना बार बार डायग्राम. राइट का पेन से राइट करने को नहीं दे रहा मेरे को, समझ में नहीं. Actually, लास्ट है ये तो हाइलाइटर है, आई थिंक हाइलाइटर. अच्छा ठीक है, विल डू हियर फटाफट. लेट्स सी कैसे करते हैं अरेंज, बिकॉज़ ये अपने को डायग्राम याद भी होना चाहिए. ठीक है, ये 886 है. समझो अभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब ये डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली. ठीक है, इफ यू जस्ट लुक एट दिस डायग्राम यू विल सी अरे बहुत कंफ्यूजिंग डायग्राम है, बट यस आई विल जस्ट मेक इट सिंपल, डोंट वरी. फाइन, लेट्स सी. नाउ करना क्या आपको, ये 886 है. once again my aim is what, to just make that three things separate: understand, data line and control lines. ठीक है, कैसे करेंगे देखो. अभी क्या कर रहे हैं, now for each IC we required this particular thing, that is a clock. So what I will do is that I will just use clock generator over here. So here I will have that 8284. To which I will just connect a crystal oscillator of some desired frequency, and here we will be getting clock, reset and ready. ठीक है, ये उसके बाद first of all, yeah, very thing, what you can say, very important thing is that now we are doing a minimum configuration. So first of all, we have to connect this particular pin MS plus MX bar to the, for the minimum configuration, this to be connected to MS plus MX bar. कहाँ connect करो? Sir, high. Yeah, we have to make it high, and high can be done by connecting by using 5 volt, connecting it to the 5 volt, and low can be done by just by connecting the ground. ग्राउंड. Okay, so 5 volt sometimes is called the logic high also, or you may say logic 1. Okay, so if I just connect to the 5 volt, yes, my 886 is operating on minimum mode. Why I'm saying this, because this is important, because if it is connected to the 5 volt, then the pins जो अपने देखे 8 पिन जो स्पेसिफाइड है, मतलब जो सेपरेटली देखे थे. ठीक है, दे विल बी एक्टिंग इन अ मिनिमम मोड, मतलब दे विल डू द फंक्शन ऑफ होल्ड, एचएलडीए, राइट, देन जो भी है. ठीक है, देन एम स्लैश आईओ बार एंड ऑल. So that pins will come in picture. And if I just connect to the ground, now the 8 pins will be acting like request, grant, then log, S2, S1, S0, etc. Fine. So that's why this particular thing is important. Fine. Yeah. So this is the first we have used that clock, or you must use the clock generator to generate a clock, and which is given the 886. And now the next important thing is that we need to demultiplex that demultiplex lines, which are address lines now. ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे? Now for that we require that 8282 latch. ठीक है, ये just say that, मतलब just give me that 8 lines which are multiplex one, and I will just keep on demultiplexing. But it required 2 signals, that is a STB, that is a strobe, and OE bar, that is output enable. ठीक है, output enable I will just make it ground, that is fine. Okay, and to this STB I have to connect ALE. एक ही है. ठीक है, अब now he says that this particular IC says now I am ready. Now you just give me whatever that multiplex lines is, lines are, I will just make it demultiplex for you. ठीक है, now which are the multiplex lines we have seen? Anyone? AD0 Sir, to AD0 to AD15. Yeah, AD0 to AD15, perfect. और किसी को याद है? Sir, A16 to A19. A? 16 to A19. Yeah, A16 to A19 multiplex with S3 to S6, पता है? Yes, sir. ठीक है, then BHE bar oblique BHE. S7, right? ठीक है, yes sir. Yes. so these are the multiplex pins. Let's see, BHE bar oblique S7.
then A16 to A19 multiplies with S6 to S3, then AD0 to AD15. Okay, so these are all multiplex lines which are there in 886, which we want to demultiplex. Okay, now the thing is that how many lines are there? Now this AD0 to AD15, these are 16 lines. These are 16, 17, 18, 19, matlab 4 lines. Okay, and this is the one line. Matlab totally we have to just demultiplex 21 lines. Are you getting it what I'm saying? Are you getting it? So 21 lines in 886, they are multiplex one. Like 80. Keep in mind, mn slash mx bar multiplex नहीं है. Try to understand. This is actually used to just give मतलब minimum मोड में कब रहेगा maximum में तो वो just control करने के लिए. इसको भी इधर मत दो. समझो. Try to understand. ठीक है. So now these are the pins which are multiplex one. AD0 to AD15, A16 to A19 मतलब address का ही part multiplex with the S3 to S3 and this BH bar oblique S7. So there are total 21 multiplex pins. Now we want to demultiplex it. ठीक है. How to do this? सर लैच ऐसी लेना Yeah, पड़ेगा we will use the latch. But now as I told, एक latch की capacity कितनी है? 16 8 8 8 बिट का. तो अपने को कितना लैच लगेगा अभी? सर 3 या we require minimum 3 latch because 2 से काम होने वाला नहीं है. 2 तो इधर ही जाएगा. इनको कौन का संभालेगा? So we require one more latch. ठीक है. So totally we required a 3 latch. Then how do we show that? It is the way to show. Means we are using a 3 latch. इसका मीनिंग है similar things पीछे. So keep in mind we have to show this 8 to 8 3 times. Otherwise you may just write number over here कि we are using a 3. Getting it? So that is a way of representing it. Keep in mind, total we are having a 21 lines to demultiplex and 8 to 8 का capacity 8 bit का ही है, 8 lines का ही है. So that's why we need a 3 8 to 8 for demultiplexing all the base. Fine. And after that, you just give that all the lines. Let's suppose I will just give this is what AD0 to AD15. Okay. Then I will give that A16 to A19 multiplex with sorry S6 to S3 and BHE bar oblique S7. So this is what is given to this. Okay, so this all pin will be given to this one. Abhi, now tell me at the output what will be available? At the output what will be available? सर A0 to A90. एड्रेस बस. अभी देखो कैसे होता है. मैंने क्या बोला आउटपुट में क्या अवेलेबल होता है. जो ALE जब हाई रहेगा तो कौन सा पार्ट जाता है बताइए. नॉर्मली ये जो मल्टीप्लेक्स लाइंस है ना मतलब लेट्स सपोज AD0 टू AD6 AD15 इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है लेफ्ट मींस ये लेफ्ट में जो भी है ना वो जाता है. ठीक है. लाइकवाइज यहाँ पे A16 टू A19 मल्टीप्लेक्स विद S63 S3 S6 टू S3. ठीक है. इसका लेफ्ट वाला पार्ट ये. लाइकवाइज यहाँ पे BHE बार ऑब्लिक S7. सो व्हेनेवर दैट ALE इज हाई ये जो लेफ्ट वाले पार्ट है ना वो जाएंगे. ठीक है. मींस व्हाट नाउ दिस आर द थिंग व्हिच विल बी अवेलेबल एट द आउटपुट. Getting it? Okay. So from here it is available with A0 to A15. From here it is available A16 to A19. So instead of just making it separate, I will just combine them and I will just say that A0 to A19. Are you getting it? What I'm doing? Is the A19? Yes. अरे लिख नहीं रहे. अरे A19 समझो. ठीक है. So here we will getting A0 to A15. Actually we will get a separate lines from A0 to A19. But I'm just combining to that make the diagram compatible. Nothing else. ठीक है. So A0 to A15 यहाँ से मिलेगा and from here we will get A16 to A19. ठीक है. So totally I may say is ranging from A0 to A19. So this is the bunch available. From here we will get PHE. PHE bar. Are you getting it? So these are the two signals which will be available at the output of this particular latch. Getting it? Okay. So that is how that by using a latch we have just yeah, come on. My God, ये क्या हुआ? अरे क्लोज ही हो गया. क्या फालतू गिरे यार. एक मिनट guys. So by using that 8 to 8 latch, we have just separated address line. You can see at the output now the address line separately is available. A0 to A19. Total address line separate हो गया. ठीक है. Now the next what? Address line separate हो गया. अब data line किधर से लूँ? उधर से या ALE. जो भी मतलब जो इनपुट दिया ना उधर से वो डेटा को ब्लॉक करेगा. उसका 8 to 8 का काम क्या होता है? जब ALE हाई रहेगा तो जिसको पास करना पास कर बाकी लोग को ब्लॉक कर. अब ब्लॉक मतलब क्या रहेगा? डेटा लाइन ना. तो अभी उसको Yes. इनपुट से निकालेंगे अपन. कम ऑन आ जाए यार. Yeah, fine. Erase नहीं हो. Okay. Now here. Okay. Now from here out of this D0 to D15 we'll be getting. Let's say मैं ऐसे दिखा दूँ. ये D0 to D15.
and we'll be getting that this status line also, that is S6 to S3. ये भी आएगा इधर से, समझो अभी. ठीक है, so they will be available over here, they will be blocked. अब block है वो इधर से निकालो. समझ में आ रहा है? ठीक है, so that is the use of that is what we are doing. ठीक है, Sir, next is S7 भी आएगा ना? Sorry, S7 भी आएगा ना? हाँ या S7 भी, very good, very good. S7 भी आएगा. It's actually S7 to S3, perfect. S7 भी है यहाँ पे, ये राइट वाले पार्ट. So राइट वाला पार्ट बचा कौन सा? D0 D15 मैंने निकाला यहाँ पे. Then यहाँ से S6 to S3 and यहाँ पे S7 जाएगा. So totally S7 to S3 रहेगा. Fine. Then you have to use a transceiver just to increase the data handling capacity, which is 8286. Okay. Now, once again, what is the capacity of 8286? 8 bit. 8 bit. And how many data lines we have? 80 to 50. 16. So how many 8286 we have to use? 2. 2. So here we will say a 2. Try to understand. 8282 we required 3 and 8286 we required 2. Okay, समझो अभी दो है. Okay. Now to which what we have to give two signal, that is T and OE bar. Okay, so T I will just connect to DT oblique R bar, which is available in a minimum mode, and OE bar which I will connect to DN bar. Fine. And this data line जो अभी ये D0 D15 यहाँ से निकला ना वो इसको दूंगा मैं. समझ में आ रहा है? And the output will be getting same, that is a D0 to D15. मतलब अभी इधर एड्रेस लाइन सेपरेट होगा, इधर डेटा लाइन सेपरेट होगा. खत्म. मेन काम हो गया अपना. ठीक है, अभी नेक्स्ट काम क्या है? किसको सेपरेट करना है? कंट्रोल लाइन. कंट्रोल लाइन. ठीक है, अभी कंट्रोल लाइन को सेपरेट करना मींस व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ एज आई टोल्ड कि व्हाटएवर वी वांट टू इंटरफेस दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस. That can be classified into memory and IO device. Okay. Now to deal with the memory device, we require two signal, that is a memory read and memory write. Likewise, to deal with the IO devices, we require IO read and IO write. Getting it? So these are the four signal I want. But I want is memory read separately, memory write separately, IO read separately, and IO write separately. So now my next task is what to generate this particular four signal. अब ये कैसे करेंगे? Just think on it. I will just come in 1 minute. हाँ, yes. सर How to वो get this signal? डिकोडर आईसी. या डिकोडर आईसी, बट कैसे यूज करेगा डिकोडर का? अभी ये इंपॉर्टेंट है. हाउ टू यूज अ डिकोडर आईसी? I will use decoder perfect. So here it is G2A bar, G2B bar, G1. दिशा ग्राउंड करना पड़ेगा, इसको 5 वोल्ट देना पड़ेगा. फाइन. Here we are having CBA. Try to understand. अभी इसको यूज करना एक इंपॉर्टेंट है. ठीक है, and actually we are having Y0, Y1, Y2 after the Y6, Y7. ऐसे पिन है अपने पास. ठीक है, अब now how to use this particular decoder to generate this memory read, memory write, IO read, IO write. Yes. सर जब भी M/IO बार 1 रहेगा तभी मेमोरी ऑपरेशन होगा. परफेक्ट. हाँ. और WR बार और RD बार से रीड राइट. Yes. Okay. अभी देखो कैसे करने का. Now how do we generate this particular signal? Because that is all is required. Because address line मैंने separate किया, data line separate किया, मैं खुश. But now we want that control line also, because control line control करेंगे ना, रीड करना है, राइट करना है, मतलब जो भी इंटरफेस कर रहा है पर उसके साथ डेटा कैसे ट्रैवल करना है. ठीक है, so for that we require that control signal. And how do we generate? That is by using a decoder. कैसा? Just like this one. Now this we are having M/IO bar signal in 886, and I will connect to the C. Then we are having just a minute. Let me see the sequence. Otherwise, yeah. Then we are having read bar, and then we are having write bar. So read bar I'm connected to the B, and write bar I'm going to the A. So this is how I connected. Okay. Now tell me, which output will be acting as a memory read? अभी देखो मैं डिकोडर का कैसे यूज कर रहा हूँ. डिकोडर का काम क्या है? जस्ट मतलब जो भी इनपुट रहेगा 0 1 0 उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक पर्टिकुलर लाइन एक्टिव लो और 0, नथिंग एल्स. ठीक है, let's suppose here I just make 0 0 1 means what will happen? It will just make that y1 bar low. ठीक है, but now this y0 y1 y2 we will be using as our requirement. अब कैसा करेंगे देखो. ठीक है, now let's suppose this is that M/IO bar. समझो अभी थोड़ा. ठीक है, this is the read bar and this is the write bar. Fine, these are the signal which are having. समझो.
I will just create dot signal. Okay. Now let's suppose here this is the signal which I have to generate as a memory read. I want to generate this particular signal. So what should be the value on these three lines? Memory read चाहिए मुझे. So m/i bar should be what? 1 1. 1 Read bar should be what? 0 0 0. And write bar should be 1 1. Try to understand. मुझे मेमोरी रीड करना है. सो m/i bar मेमोरी कब बोलेगा जब ये 1 रहेगा. रीड करना है ना. सो रीड बार है मतलब ये एक्टिव कब होगा व्हेनेवर इट इज 0. सो आई वांट इट टू बी 0. एंड मुझे राइट करना है क्या नहीं. सो एक्टिव बार है मींस व्हाट आई जस्ट मेक इट लो. तो 1 करेगा तो वो काम नहीं करेगा. समझो. सो इफ आई जस्ट गिव द 101 कॉम्बिनेशन ओवर हियर. So whatever signal is going low, that will be acting as memory read for me. And which Pin one will number go? 5. 101 means what? 5 Wi-Fi. So जो भी Wi-Fi signal है ना, Wi-Fi वाला signal, that will be acting as a memory read for me. Are you getting it? So for the decoder, it's going to be the Wi-Fi, but now for me, it is going to be memory read bar. Are you getting it? yes समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. So this is the one I'm just using decoder for my purpose. उसका प्रॉपर्टी यूज करके मेरे लिए काम कर रहा है. ये तो डिकोडर तो बोलेगा मैं वाईफाई मैंने लो किया बट उसके लिए वाईफाई है बट मेरे लिए क्या रहेगा अभी मेमोरी वाई दैट इज व्हाट द कॉम्बिनेशन. इसके लिए इनपुट रहेगा 101 बट मेरे लिए जैसे मतलब m/i bar 1 है रीड बार 0 है राइट बार 1 है. समझ में आ रहा है क्या? एंड बिकॉज़ ऑफ दिस व्हाट द सिग्नल विल गो लो एज अ वाईफाई इट इज गोइंग टू बी मेमोरी रीड सिग्नल फॉर मी. ठीक है. लाइकवाइज मेमोरी राइट कैसे रहेगा? 1 0 नहीं 1 1 मेमोरी 0 राइट के लिए आई हैव टू जस्ट मेक इट 1 ही रहेगा. रीड नहीं करना तो दिस इज गोइंग टू बी 110 1 एंड राइट करना है मतलब ये क्या रहेगा 0 0. 0 मतलब यहाँ पे 6 110 इफ आई जस्ट गिव 110 मतलब कौन सा सिग्नल होगा 6 line y6. y6 तो y6 line will be acting as memory write for me. Are you right getting it? Acting as a memory write bar signal for me. समझ में आ रहा है? Likewise, tell me which output of this one will be acting as a IO read. IO read के 0 लिए IO 0 read now this is Y6 what 1 should be what 0 0 1 0. रीड करना मतलब यस रीड करना तो इसको 0 रखना पड़ेगा. एंड खत्म 001 मतलब y1 will be acting as IO read for me. ठीक है. एंड लाइकवाइज फॉर IO राइट 0 1 0 010. Perfect. So out of this decoder, that y1 and y2 will be acting as IO read and IO write respectively, and y5 and y6 will be acting as a memory read and memory write respectively. Are you getting it? So this is how we'll be using a decoder to generate that required control signal. Fine. Understood? yes Any doubt to anyone? Yes, any doubt? Have you got this diagram? Hello? no sir Okay, fine. So this is how this interfacing is done. Now I am happy. Now everything is ready with me. We are having understand, we are having data, and we are having the required control lines as well. समझ में आ रहा है? ठीक है. Now just reverse this diagram once again फटाफट. कैसे देखो डायग्राम? बिकॉज़ डायग्राम बड़ा बट इजी है. ठीक है. यहाँ पे 86 है. यहाँ पे कौन है? What do we have over here? oscillator clock generator Yeah, clock generator. Yeah, you may say oscillator, but it's a clock generator specifically. ठीक है. यहाँ पे we are having that 8 to 8 2 latch. 8 to कितना 8 latch है? 3 3 latch. ठीक है. Here we are having 2 did trans two receiver transistors. That's it. receiver ठीक है. And here we are having decoder 3 to खत्म. 8 ठीक है. Now ये 8282 8284 sorry 8284 clock generator के लिए इनपुट क्या रहेगा? Reset and ready. ठीक है. और ये oscillator आउटपुट क्या रहेगा? external 1 external 2 Clock reset ready. Fine. Now here we are having that mn/mx bar. This is to be connected to mean 5 volt 5 volt. ठीक है. Fine. Now this one is a latch. So latch के लिए actually we require two control signal. Which are they? ALE नहीं STB and STB OE and OE bar. So OE bar we will be grounding and STB को we will be giving a ALE. ठीक है. Now उसके बाद ये रेडी है. अब इसको जितने भी दुनिया भर के मल्टीप्लेक्स लाइन है सब दे. Which are the multiplex lines? AD0 to AD15 AD0 to AD15. A16 to A19 S3 to S7 and then BHE bar oblique A- S7. S7 ये दे दो इसको. Are you getting it? Now at the output, what will be available? AD0 to A0 to A19 A0 to A19 and BHE bar. That is BHE bar. ठीक है. And यहाँ से we can take out that status line that S7 to S3. And these are the data lines which we will be giving to the transceiver. Are you getting it? Now the transceiver require two signals, the T and
OE bar. To the T, we will connect what? D नहीं IO slash Yeah, DT oblique R bar. To the T means what? Transmissive. So which is the signal which will tell data transmit करना है कि receive DT oblique R bar. That's it. And OE bar we will connect to the DN bar. DN bar. समझ में आ रहा है? And at the output we'll be getting just simply data line. Data line है तो bidirectional दिखाओ. खत्म. Now this is a decoder which require J2 B bar, J2 A bar, G1. ठीक है? These two I will ground. This I will connect to 5 volt. ठीक है? Now to this we require 3 signals. There's a 3:8 decoder C, B and A. So I will give memory slash IO bar, read bar and write bar. Keep in mind, do not change the sequence. Huh? If you change the sequence, तो यहाँ पे भी change करना पड़ेगा फिर. Because now they are in this particular fashion, M slash IO bar, read bar and write bar. That's why I can say that Y1 bar will be acting as IO read. ठीक है? Y2 bar will be acting as IO write. Y5 bar will be acting as a memory read. And Y6 bar will be acting as a memory write. Fine. If I just change the sequence, accordingly I have to change over here. But normally use this one. M slash IO bar, read bar and write bar. Khatam. This is how what is the minimum mode ka configuration. And now this particular configuration is ready to interface with any of the IO or memory device. Getting it? Okay. So this is called as a minimum mode configuration. Have you understood? Diagram बहुत बड़ा है but समझो. Any doubt? No. ठीक है. अभी actual diagram में देखो क्या है. So that is what is there which we have just drawn right now. 886 यहाँ पे 8284 ये 3 latch, the other 2 transceiver and this one is decoder. ठीक है. अब आपको करना क्या है, ये सब तो लिख लेते, बट उसके बाद जो भी बचा हुआ पिंस है, बचा हुआ पिंस यहाँ पे लिखने, like NMI, INTR, INTA bar, hold and HLD. Getting it? So for this you must know the pin diagram. So what are the remaining pins are there that you have to show over here. That's it. That is what is the minimum mode configuration. Any doubt? Any doubt? I hope it is good. Okay. Now the next we will see maximum mode configuration and then we will see the timing diagram. ठीक है. अब इम्पोर्ट अभी प्रॉब्लम कैसे पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक यू द पिन डायग्राम. इधर है पिन डायग्राम बोलिए. Yeah. Now what is the not problem actually? Yeah. Now what is happening is that whenever I just connect this particular MX bar to the ground, होगा क्या पता है? Now this pin will come in picture. They will not. Whole HLD, WR bar, M/I bar ये सब नहीं आएंगे. ठीक है? Now these are the pins will come in picture. Request, then lock, then S2, S1, S0, QS and QS0. Fine. Now the problem is that now as these pins are getting replaced by this one, so we will not have any hold and HLD, ठीक है, उसका काम तो ये कर लेंगे. But we do not have write bar. We do not have IO bar. We do not have DTOP bar. We do not have DN bar, and we do not have ALE also. And these are the 5 signals which we require to give it to the ICs, ना? WR मुझे decoder को देने के लिए चाहिए. M/IO bar भी once again we have to give it to the decoder. Then उसके बाद DTOP/R bar, yes, we have to give it to the transceiver. DN bar भी उसको देना है. And ALE we have to give the latch. ठीक है. Now these are the pins or these are the signals which won't be available in a maximum mode. अब interface कैसे करेंगे? So though we do have that latch and all, but who will be giving that control signal to that? Latch के लिए ALE कौन देगा? Then decoder के लिए M/IO bar, WR bar कौन देगा? Sorry? Are you getting my question? Okay, so that is all is happening when I'm just connecting this to the maximum mode. Yeah, this will come in picture. Welcome. But these are also the important pins ना, right bar, M/IO bar, DTOP/R bar, DN and ALE. ये भी तो important है. अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं बना नहीं सकता सर्किट मेरा. ठीक है. So how to generate them? Now for that we'll be using a bus controller. The one more new IC, which is called the bus controller. ठीक है. So let me just go to that. So that is what we required extra in maximum mode. I hope you got the reason why we do require that bus controller. Yeah. This is actually the bus controller 8288. अब इसके फिलहाल तो मैं डिटेल में नहीं जाएगा. I just give it. I will just keep it simple. Block में दो अपना. 8288 करता गया. Now this one is also the bus controller, which is once again a 3:8 decoder. मतलब वैसे ही है. 3:8 मतलब you can just remember like 3:8 decoder. ठीक है. Then it will take a 3 input signal and it will give the 8 output signal.
ठीक है. So this is a 8 to 8. Try to understand. Now it will take care of all that missing signal. अब कैसे देखो. Now for this bus controller we need to give that S2, S1 and S0. Getting it? For this bus controller S2, 8 to 8, we have to give that S2, S1 and S0. Now we have seen the table for the S2, S1, S0. याद है? वो memory read, memory write, IO read, IO write ऐसे वो बना था signal. Then instruction fetch and all. ठीक है. So depending on that combination, it will generate that memory read signal. Memory read. ठीक है. Memory write, IO read, and INT bar. So these are the 5 signals we are actually taking from the table. समझो. ये जो table है ना, ये वाला, ये अपने देखा था. Depending on the combination of that S2, S1, S0, it will generate actually this many signal, but out of that we'll be using this INT bar, IO read, IO write, memory read, and memory write. Okay, so these are the 5 signal we'll be using. Getting it? I hope you are understanding. So I'm just giving that S2 bar, S1 bar, S0 bar to this 8 to 8, and it will be generating this 5 signal. But as I told you, the 3:8, we have to just treat as a 3:8. So it has to just create 3 more signal. About 3 more signal, कौन सा? ALE, DT oblique R bar, and DEN. Keep in mind it generates DN, not DN bar. Getting it? So it's a 8 to 8, which you may say it is just like a 3:8 decoder. But just to remember purpose, it's not actually the 3:8 decoder. Okay, just to remember it, it's just like it take a 3 input, that is S2, S1, S0, which are we are having with the maximum mode that we have to give, and with this it will just generate the control signal. जो भी memory read, IO read and INT bar चाहिए वो generate कर देगा. ठीक है. But for the latch and transistor required 3 signal. That is what ALE, DT oblique R bar and DEN. So that will be generated by 8 to 8 as well. ठीक है. So these signals are ALE, DT oblique R bar and DEN is not DN bar. समझो. ठीक है. And now this ALE, DT oblique R1 and DN we will give it to the here. So ALE में यहाँ से निकालेगा. I will just highlight it. Yeah. So ALE I will just take it from here. Right? Yeah. ALE I will take it from here and यहाँ पे दूंगा मैं ये वाला से. इसको 8 to 8. ठीक है. So keep in mind now the 8 to 8 won't get ALE from the 886. Why? Because now we are in maximum mode. You can see over here. I have just grounded it. जैसे ground करेगा मतलब अभी वो ALE, DT oblique R bar, DN bar वो सब pins available नहीं है मेरे पास. ठीक है. That we have to derive from the 8 to 8. इधर से derive करना पड़ेगा. Getting it? ठीक है. So now this ALE I will connect to the strobe over here. Then afterward this DT oblique R bar अभी ये इधर से जाएगा इसको. 8 to 8 से इधर से नहीं आएगा. Keep in mind वो गलती मत करो गलती से कि DT oblique R bar इधर दिखाया करके. No, not possible. यहाँ से सिग्नल आएगा नहीं. Why? Because you are in maximum mode. ठीक है. Just a minute. Hello. Will you just call me after 4 p.m? I'm right now in busy in one meeting. 4 p.m. 4 p.m. Okay. Yeah. Fine. Yeah. Okay. Where I was? Yeah. This one. So now this DT oblique R bar will come from here and DN. Now actually this particular 826 want DN bar signal because here we are having OE bar. So that's why just keep in mind this is the important. We have to connect the NOT gate. It will just make it NOT. Okay. So the DN we just connect a NOT and we'll make it DN bar. अब वो जाएगा OE bar को. समझ में आ रहा है? So this is the only change. The change क्या है? First of all we have to just connect to the MS/MX bar. Second thing is that here we will not get stroke from the ALE from this 886. Here also we will not get the DT oblique R bar and DN bar. Now that we have to take it from 8 to 8. Now here instead of the decoder we will have a 8 to 8 to which we will give a signal S2 bar, S1 bar, S0 bar. It will generate the control signals. Fine. And it will give the 3 more signals. That's the ALE to the latch, DT oblique R bar to the 8286 and DN. So to make it DN bar, we just connect NOT gate and it will be given to the OE bar. ठीक है. So that is the only change in a maximum mode का configuration. Understood? समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes sir. Okay. ठीक है. So once again here also एड्रेस हाँ नहीं वही तो कुछ नहीं कंटिन्यू वही बोल रहा था. Okay. ठीक है. So once again here we can see that we are having address line separate, data line separate and control line separate. So I am खुश. Getting it? So this is how once again we are generating these 3 signals separate by using that maximum mode. And one more thing is that this 8 to 8 required clock also. तो ये इधर से clock उठाने का और यहाँ पे देने का. You can see here. It required for synchronization तो 8 to 8 को clock लगता है तो यहाँ से उठा के देने का. Fine.
ठीक है. So that is already that is what the configuration for the maximum. ठीक है. अभी इंपॉर्टेंट, अभी वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो भी अभी जो बाकी बचे हुए पिंस है, दैट वी हैव टू ड्रॉ. जो भी पिंस यहाँ पे कवर नहीं हुए, दैट एवरीथिंग हैव टू ड्रॉ हियर. ठीक है. दैट इज एनएमआई, आईएनटीएल, then request grant, taste bar, lock, and this QS0 and QS1. This is what you have to just list over here. So जो भी pins बाकी है, that you have to show it over here. Why? Because totally in total there must be the 40 pins. जितने भी pins है सब आने चाहिए. ठीक है. हाँ, but these are the compulsory. ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो कंपल्सरी है. उसके बाद if you remember the pins, you have to list it over here. Ready? So this is how now the 886 is ready to interface with anything. समझ में आया? तो ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन रहना ही चाहिए. देन यू कैन जस्ट कनेक्ट डिफरेंट थिंग्स टू द 886, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा. गेटिंग इट? एनी डाउट इन दिस बोथ द कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड? आई एम जस्ट गिविंग यू द 5 minute. If you want, you may just take a pen and paper and try to draw this diagram, because they may ask this diagram in exam. Okay, draw the minimum mode configuration, draw the maximum mode configuration. ठीक है. Just take a 5 minute and do practice of it. Take a 5 minute and try to draw it by yourself. कुछ गलत रहेगा तो फिर you can see the diagram. ठीक है. Go for it. Take a 5 minute. Otherwise just revise in mind. हाँ. सर वो मिनिमम मैक्सिमम मोड सिलेक्ट करने के लिए वो फिजिकली कनेक्ट करना पड़ता है? Yes, yes. MS पर आपको 5 वोल्ट ने तो ग्राउंड को कनेक्ट करना पड़ता है. सर Getting? उसके लिए कोई अलग से सिग्नल नहीं दे सकते हैं सर? अलग से तो मतलब कौन सा भी 5 वोल्ट का सिग्नल देना चलेगा जो कंटिन्यूअस 5 वोल्ट रहेगा. बट नॉर्मली वी आर हाँ हैविंग, मतलब वो ऐसा मतलब कोई प्रोग्रामिंग से दे सकते हैं क्या? नहीं प्रोग्रामिंग से नहीं दे सकते, वो हार्डवेयर ले देना पड़ेगा. हाँ हाँ वही कुछ. या मतलब बैटरी से रे. हाँ सर. ठीक है. चलो जस्ट रिवर्स द डायग्राम, देन वी विल गो फॉर टाइमिंग डायग्राम.
Come on, everyone, revise it. Then we will start with the timing diagram. Is it done? In and out. Okay. Are you ready for timing diagram? Yes, sir. Hello. Yes, sir. सर हाँ बोल. तो क्वेश्चन था वो मिनिमम मैक्सिमम मोड मतलब क्यों रहता है और डिफरेंस क्या रहता है? Like means if you want to attach any other processor with the 886 now, then we have to go with the maximum mode. And if you do not want to attach any processor, then go in a minimum mode. Understood? It's just like on the to the 886 we can connect one memory IO device, that is fine, but with that we can just connect some another processor also. Because if you have to connect any other processor, so in that case there is no option, you have to go with the maximum mode. Fine. If you just want to connect that IO devices and the memory and all, then you can just use a minimum mode as well. Getting? यस सर. या तो मैक्सिमम मोड एक्चुअली स्पेसिफिकली बना है जब नया प्रोसेसर इसके साथ कनेक्ट करना है. एग्जांपल 887. अब वो कैसे कनेक्ट करें वो फिलहाल तो नहीं है सिलेबस में, बट ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. आई विल ट्राई टू फिनिश विद द हेल्प ऑफ नोट्स, सो मेरा टास्क थोड़ा इजी हो जाए. टाइमिंग डायग्राम. तो बिफोर दैट फर्स्ट, अरे ठीक है. Okay. So close. Fine. Yeah. So now in a timing diagram, actually we are having 8 diagrams, but we just solved out. Let's see what I do mean by timing diagram. Have you heard this name timing diagram? यस सर. Okay, girls, have you heard this name timing diagram? Girls, जो कभी बोलती नहीं है. अंजलि, आदिति, साइमा, यशा. Have you heard this or not? Timing diagram. Yes, sir. Okay, ठीक है, good. Because if you are knowing, मतलब at least you do have idea of it, then it will be easy for me. Let's see. अभी timing diagram. Now there are, as we know,
And 886 operate in two modes. There is a minimum mode and maximum. Fine. In minimum mode, it has to perform two operations: read and write. In maximum also once again two, that is read and write. Okay. In this, that read operation we can do with memory as well as with IO. Likewise, this IO or write operation we can do with memory as well as IO. Likewise, here we can do the read operation with memory, IO. Here also we can do it with memory and IO. Okay. So these are the 8 diagrams are there which you have to see. We just like memory read in minimum mode, IO read in minimum mode, memory write in minimum mode, IO write in minimum mode, like memory read in maximum mode, then memory write in maximum mode. Likewise. Okay. So these 8 diagrams are there, but we will just combine this in one. I will just combine these two in one, this two in one, and this two in one. So we have to see the 4 diagrams, 4 timing diagrams. Okay. It's just like how to read in minimum mode, how to write in minimum mode. M/IO bar is just one signal which will decide whether it's dealing with the MN memory or IO. So we just combine them. Okay. So we have to see the 4, that how to read in minimum mode, how to write in minimum mode, how to read in maximum mode, how to write in maximum mode. Simple. Okay. I'll be just telling you one in thoda sa detail. Minimum mode and sorry, read in minimum mode, and no, read नहीं बताऊंगा, write बताऊंगा मैं. Okay. I will just say write in minimum mode, and rest of you have to just understand, and then I will just go quickly. Okay. Let's see. Let's start with the timing diagram. Memory write for minimum mode. Yeah, this is what you also. So this is the timing diagram. If you know the timing diagram what it is, then you must have what you imagine this particular structure. Okay, fine. Yeah, let's see. So timing diagram, first of all, what is the use of timing diagram and what does this timing diagram tells? Anyone knows? सर Once again, I'm not going in that deep. हाँ बोलो. कौन सा साइकिल चल रहा है वो बता. Very good. मतलब कौन से टाइम पे, मतलब because timing diagrams is all about cycles. ठीक है. साइकिल मतलब क्या, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के जो टाइम लगता है पूरा, उसको एक साइकिल बोलते हैं. इफ आई जस्ट कीप इट सिंपल, मतलब मेमोरी से डेटा रीड करना है, वो एक साइकिल हो गया. देन मेमोरी में डेटा राइट करना है, वो एक साइकिल हो गया. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. सो दिस आर कॉल्ड द साइकिल्स, एंड इन द साइकिल्स वी आर हैविंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स. That T1, T2, T3, T4. When it requires some T state, that they are called the T state, if you know. ठीक है. It requires some T state. T state मतलब क्या, क्लॉक पीरियड, मतलब क्लॉक का एक सिंगल पीरियड, that is called the T state, nothing else. Fine. Okay. So that each operation require different T set. So here we can see that they require only 4 T set, and in each T set something is happening. In each T set means in each time slot something is happening. So to know what is happening in that is called the timing diagram, nothing else. Okay. So let's see. So in memory write, now we want to write into the, now try to understand first of all on board. Memory में write करना, तो तुझे करना क्या पड़ेगा? ये memory है, ये MUP है. ठीक है. इधर से तुझे इधर राइट करना है किसी लोकेशन में. क्या करना पड़ेगा, कैसे राइट करेंगे हम? पहले मुझे जस्ट ऐसा नॉर्मली बताओ, देन विल गो टू द डायग्राम. राइट करना है, कैसे करूंगा? राइट किसको करना है, म्यूपी को कि मेमोरी को? यूपी को. या म्यूपी वांट टू राइट इन व्हाट? मेमोरी ना. मेमोरी. हाँ ठीक है. तो कैसे करेंगे? मेमोरी को 1 रखेंगे, राइट को 0. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल whenever we go to the memory, whenever we want to go to the memory, पहला क्या चाहिए मुझे मेमोरी में जाने के लिए? एड्रेस. एड्रेस. कीप इन माइंड, मेमोरी एड्रेस के सिवा कुछ नहीं है. मतलब मेमोरी अगर जो मेमोरी के साथ खेलने तो एड्रेस चाहिए. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव टू रीड समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीच टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस ना. Yes. Are you getting it? ठीक है. So first of all you have to pass address. Sorry, we want to write something. Sorry. So first of all you have to reach to that address. and जैसे एड्रेस मिलेगा तो राइट लिख देने का, खत्म. So that is what is simple. That is what we can think about memory write. ठीक है. As just simple method. ठीक है. So memory write means what? First of all you have to find out the address at which location you have to write. and जैसे वो एड्रेस मिलेगा लिख दे. That's it. Now that is the same thing which you are going to do. ठीक है. अब देखो कैसे करने का. Try to understand by using a timing diagram. ठीक है. Now this is a timing diagram. इसको मिटाओ कैसे? नहीं.
let it be. अच्छा सर जूम आउट से नहीं होगा? sorry जूम आउट ना I think ये मैं पहली बार ट्राई करूंगा इसको मारो इतना हमारा नहीं था लेट्स सी अभी देखो कैसे होता है टाइमिंग डायग्राम समझो अभी क्या होता है आई विल डू आई नीड टू ड्रॉ इट ऑन बोर्ड की यहाँ से समझ जाओगे आप लोग समझ जाएंगे सर सॉरी समझ जाएंगे सर okay fine so that will just is a matter I hope now this is clear to you diagram clear है ठीक है अभी देखो कैसे करते हैं now first of all for any timing diagram yes we need to draw a clock because clock ही तो timing देने वाला है and जो भी म्यूपी में होता है ना is everything based or reference to the clock is a reference for each and every operation in म्यूपी ठीक है so we are just drawing a keep in mind clock कैसे draw करूं मैं I am just drawing some slanting edge not a vertically downwards because there is also practically मतलब we just actually if I just say ideally so it must be just straight line मतलब square wave जैसा square wave नहीं आएगा ये ऐसे आएगा because that is time in time is sort of practical situation it's a practical situation and we have to just think about practical things try to understand ठीक है everything here is a practical one practically क्या हो रहा है fine so that's why कभी भी clock we do not get directly sharp edge ऐसा थोड़ा सा slant ही मिलेगा so that's why it is shown like this one fine so here we required 40 stages to complete this particular operation we are seeing memory write operation fine just understand this properly then the rest of the three you have to do it by yourself okay let's see now here we are having t1 t2 t3 t4 so we require 4 t state okay uske baad now first of all we require now these are the signals which have to go in this sequence you can just know this signal कौन से पहला ALE दिखाना है then उसके बाद multiplex times in that BH1 oblique S7 A90 to S6 S6 to S3 then AD15 to AD0 then write bar read bar M slash IO bar DT oblique R bar and DN bar so these are the signal which I have to show in this one in this timing diagram because ये signal अपने को useful है for memory ठीक है अब देखो yeah so first of all now what is the function of ALE that is the function मतलब we cannot change it ALE का काम क्या है कि ALE first T1 set में अरे क्या हुआ yeah ALE will go high in a T1 set that is what is the function of ALE so ALE मतलब ये पहले cycle पे just T1 slot है in that case it will just go high and for the rest of the time period means what till this particular operation get over it will be the low ठीक है for the rest of the time period it will be the low समझ में आ रहा है ठीक है try to understand guys if you have any doubt then please ask me I'm just assuming कि you do have some background of timing diagram that's why I'm just going थोड़ा सा स्पीड में पर अगर आपको लगे कि नहीं समझ आया please interrupt me okay then here we are having BH bar oblique S7 A90 to A16 slash S6 to S3 keep in mind memory right मतलब क्या पहले मुझे एड्रेस देना है उसके बाद मुझे लिखना है तो पहले एड्रेस जाएगा बाद में डेटा जाएगा ठीक है so now whenever ALE is high what is happening with the multiplex lines ALE high रहता है तो क्या होता है सेपरेट होते हैं सर या एड्रेस सेपरेट बस होते हैं पास होता हाँ जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट वो जाता है ना ठीक है अभी नाउ दिस आर द लाइंस फॉर BH bar oblique S7 गाइस वन मोर थिंग इफ यू वांट यू मे जस्ट शो दिस लाइन सेपरेटली हर एक लाइन आप सेपरेट लिखा सकते हो मतलब BH bar oblique S7 सेपरेट A19 का और A6 का लाइन सेपरेट A18 सेपरेट A15 सेपरेट A16 सेपरेट A15 सेपरेट 14 सेपरेट 13 separate likewise up to the A0 each and you can draw that each and every line actually that is what you know ideal way to draw but now we do not have that much page so that's why we just combine them ये combine किया हुआ समझो हर एक का मीनिंग समझो एक्चुअल में इफ यू वांट टू ड्रॉ द टाइम लाइन ना हर एक पिन सेपरेट निकालना पड़ता है समझ में आ रहा है क्या ठीक है वी हैव टू जस्ट डू दैट लाइक वी हैव टू जस्ट मेक ईच एंड एवरी पिन सेपरेटली मतलब जैसे मैंने बोला इधर अपन ने कंबाइन किया AD0 to AD15 बट यस यू हैव टू शो दैट AD15 लाइन देन AD14 लाइन देन AD13 लाइन अप टू द AD0 लाइन ऐसा एक एक बनाना पड़ता है बट टू जस्ट मेक इट कॉम्पैक्ट वी आर जस्ट कंबाइनिंग देम fine now let's see now when the ALE is as I told now this is a group of lines this is a group of line समझो अभी अब एक पिन रहेगा ना तो हम ऐसे शो करते हैं सिंगल है मतलब इधर इट विल बी द 0 और 1 सो आई एम जस्ट वी आर जस्ट शोइंग 0 and 1 एक्चुअली ईच एंड एवरी लाइन इज गोइंग टू कैरी 0 and 1 only each and every line whatever I shown over here they're going to carry 0 and 1 only ठीक है but how do we show try to understand here now here BH bar oblique S7 A90 to A16 slash S6 to S3 but whenever the ALE is high which signal will go BHE and A19 to yeah A16 BH bar and A90 to A16 will go getting it okay and now they will also have some values of zeros and one now as we are combining in a bus now that is a what you can say that way to show how do we show let's see I will just tell you कैसे दिखाते हैं हम लोग yeah just do over here now let's suppose this is the timing slot
just pardon me for this vertical lines. Okay, let's suppose BHE bar समझो, ये मेरा एरिया अपन ने देखा ऐसा हाई जाता है, बाकी सब टाइम के लिए लो होता है, ठीक है। ये मेरा T1 है, T2 है, T3 है, इसको T4 है आपका, ठीक है। नाउ BHE बार डिपेंडिंग ऑन दैट, मतलब कौन से मेमोरी सेगमेंट के साथ वगैरह, मतलब इवन बैंक के साथ खेल रहे हैं कि ऑड बैंक के साथ, डिपेंडिंग ऑन इट विल टेक दैट 1 0, समझो, ठीक है। 1 मतलब ये ऐसे, मतलब 1 कैसे देखा देखो, ऐसा देखा था 1 एंड 0 पे टू शो लाइक दिस वन। डोंट जस्ट ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग नहीं होता है सर आप बोलेगे इसको 1 है ये 0 है, नहीं, ठीक है। इफ इट इज गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप तो ये 1 है, इफ इट इज गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन देन दिस इज 0 है, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट इंडिकेट 0s and 1 लाइक दिस वन, ये इसको मीनिंग नहीं रहता, ये 1 भी नहीं है 0 भी नहीं है ये लोग, ठीक है। सो BHE बार डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग, सो इट विल बी टेकिंग 1 एंड 0, जैसे भी रहेगा 1 कुछ टाइम के लिए 1 रहेगा, उसके बाद 0 1 एंड 0, ठीक है। उसके बाद A19 then A18 A17, try to understand A16 A15, these they will have their own address because as I told कि memory read मतलब कैसा, ऐसा try to understand ये इंस्ट्रक्शन move AX, bracket 2341, समझ में आ रहा है क्या, समझो थोड़ा डिटेल में, ठीक है। move AX, bracket 2341 ना, मतलब we are just reading from memory, right or wrong, okay, we are going to this particular memory location, उधर से रीड करने का रीड और म्यूपी में लाना है, that is what a memory read, that is all is happening over here, ठीक है। and now this is the address 2341. now let's suppose 2341 base address है मेरा 5000, so actual address is 52341, ठीक है। अब ये एक्सपांड होगा, समझो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, एक्चुअली आई वांट टू गो इन फुल डिटेल, बट ठीक है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मतलब क्या 0101, 2 मतलब क्या 0010, 3 मतलब क्या 0011, 4 मतलब क्या 0100, this one मतलब क्या 0001, ठीक है। now this is what the address is, now this is what it A19 has to carry, this is what A18 and likewise up to the A0, समझ में आ रहा है क्या। if this is the address, now the A19 का status क्या है 0, so A19 will carry 0, समझ में आ रहा है क्या। A18 should be what 1, तो A18 will be carrying 1, ठीक है। then A17 should be 0, तो A17 should be carrying 0, A16 will be carrying 0, समझ में आ रहा है क्या। so this is how actually you have to just draw each and every line, because each and every line will be carrying some zeros and 1, getting it, ठीक है। but it is not possible to have that such a huge just a big diagram, so what we do is that we just combine them ऐसा, BHE bar oblique S7 A19 into A16 multiplies with S6 to S8. So what does it tell? Now instead of just draw each and every line, we can just show like this one. अब ये इसका मीनिंग देखो, समझा क्या होता है, we just show like in this one, ऐसा। अब इसका मीनिंग क्या है, so here we are having this is called as a 0 and this is called as a 1, and here we will just write what are the signals are, here BHE bar जाएगा and A19 to A16 जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, now this particular line will take properly that zeros and 1 depending on क्या है, जैसे मैंने बोला BHE bar इस टाइम के लिए अगर 1 है तो फिर ये 1 लेगा, ठीक है। A19 if it is low तो फिर ये low लेगा, ठीक है। so this is the मतलब ये सब you can just represent like this one, are you getting it, ठीक है। so how do we represent, once again just combine that lines and you have to just draw it in a bus, अब bus मतलब कैसे, we can just show like this one, that 0 to 1 transition and 1 to 0 transition, and in that what are the lines will be going, so उनका just नाम लिख दो, and that assumes कि they will take a proper value either 0 or 1, समझ में आ रहा है, ठीक है। so actually we have to draw like this one, but we do not have that much time and we do not have that much paper also, so we just go with this method, ठीक है। so ये ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, मतलब फिजिकली एक्चुअली क्या एक एक लाइन 0 से 1 हो रही है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। पर ये लोगों को कंबाइन करके अपन ऐसे दिखाते हैं, फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। so that is what is going here, so whenever area is high it will just pass BHE bar oblique A19 A16 हो जाएगा। अब एक्चुअल में देखो कैसे, keep in mind it's a time in is a practical thing, it's a practical thing guys, once again I am going to trace on this particular diagram, उसके बाद मैं सब आपको बोलूंगा करने के लिए, ठीक है। so that's why I'm just giving time to this particular diagram, let's see, yeah, now it's a practical thing। अब एक्चुअल में कैसे होता है, what is the ALE का use is just whenever there is a high ये लेफ्ट वाले सिग्नल जाएंगे, अब ये जो लो रहेगा तो राइट वाले सिग्नल जाएंगे, बट अभी होता है कैसे प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल थिंग है, एक्चुअली इट इज गोइंग लोअर हियर ना, एरिया यहाँ पे लोअर है, सो मतलब एक्चुअल में यहाँ इधर तक, मतलब एट दिस एज अप टू दिस वाज ओनली वी मस्ट हैव दैट BHE bar oblique A9 to A16, यहाँ पे खत्म होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्चुअल में खत्म नहीं होता, जैसे लोग इट विल टेक सम टाइम, समझ में आ रहा है, टाइमिंग डायग्राम है, अगर जो टाइम पे जो हो रहा है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आइडियली व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इज दैट आइडियली इट मस्ट क्लोज ओवर हियर, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था, यहाँ पे इधर ही खत्म करना चाहिए था आपने, BHE bar oblique A9 to A16 यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली इट गोज इन T2 एज वेल थोड़ा सा, ठीक है। सो अप टू द T2 ऑन दिस पर्टिकुलर लाइंस वी विल बी हैविंग अ BHE bar and A9 to A16, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। एंड आफ्टर दैट विल बी हैविंग S7 to S3, बिकॉज़ अभी ALE लो हो गया ना, अब ALE लो हो गया तो फिर वो राइट वाला पार्ट, समझ में आ रहा है,
It will pass at S1 to S6. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Understood? ठीक है. Likewise, now say AD0 to AD15. As I told, actually they are the separate lines, but we cannot show them. We are just combining them together. ठीक है. So combine करके together रखा दें. ठीक है. So as ALE is high, so in the T1 slot actually A15 to A0 जाना चाहिए. And that is also true. मेमोरी में पहला क्या जाना चाहिए? एड्रेस एंड उसके बाद डेटा लिखेंगे अपन. समझ में आ रहा है क्या? Fine. So what I will do is that now when the ALE is high, it will pass A15 to A0. ये थोड़ा इधर पेनिट्रेट करेगा because ये टाइम इन रियल लाइफ में क्या हो रहा है? रियल लाइफ में इसका साथ थोड़ा सा पार्ट लेगा वो. एंड उसके बाद when the ALE is low, ALE is low, मतलब वो एड्रेस पे पहुंचा. And now what the UP knows, it can just write फटाक से. After just reaching the address, immediately we can write that data. समझ में आ रहा है क्या? So D15 to D0 लाइन पे जो भी रहेगा वो उस लिखेंगे अपन. ठीक है. Now the right bar. अभी right bar का फंक्शन देखो क्या होता है. Now we want to write a data ना. We want to write a data. समझो. We want to write a data. ठीक है. So right bar क्या होता है कि initial T1 में वो high रहेगा. Why? Because on this line address is flowing. We do not want to write this one. We want to write a data. So initial मतलब right bar है. काम कब करेगा जब वो 0 रहेगा. So initially on T1 it will be the 1. ठीक है. And जैसे वो address खत्म होगा, it will just make it 0. So that now the next data is there. And we want to write a data. So write data write करने के लिए क्या write सिग्नल data के नीचे write मतलब वो write बार 0 होना चाहिए. Are you getting it? तभी जाके वो write करेगा. ठीक है. So keep in mind we do not make write signal from low from starting. होगा भी नहीं because मुझे address को write नहीं करना है, मुझे data को write करना है. समझ में आ रहा है क्या? So right bar signal will go low when address line जब खत्म होगा ना उसके बाद वो right signal low होता है. Why? अभी मुझे data write करना है इसके लिए. समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है. So this is the right signal. And here actually if you want you may just show the read bar also. But here we do not want to read something, so read bar will be the high continuously. Are you getting it? Read bar will be high continuously. ठीक है. If you want to show you may show the read bar also, but यहाँ पे मैंने नहीं दिखा है. But yes, if you want you may show. But as it is a memory write, we do not require a read bar read signal. So read bar हमेशा high रहेगा. So high मतलब वो काम नहीं करेगा. ठीक है. Then m/io bar. As I told, memory and IO read we are just going to combine. तो मतलब combine ऐसा. ठीक है. अगर मुझे सेपरेट करना रहता मतलब सो मेमोरी रीड तो फिर क्या दिक्कत मैं m/io bar 1 जाता ना. m/io bar should be 1 अगर वो मेमोरी है. एंड अगर IO के साथ रीड करना है तो m/io bar should be the low. खत्म. बट हियर आई एम जस्ट कंबाइनिंग. मतलब दोनों डायग्राम एक साथ कंबाइन किया अपन ने. अगर लो रहेगा तो IO के साथ डील कर रहे हैं, हाई रहेगा तो मेमोरी के साथ डील कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? सर एग्जाम में सिर्फ मेमोरी राइट पूछा तो फिर इसमें से हाँ मेमोरी तो फिर यहाँ पे एक ही सिग्नल लगाने का. एक ही दिखाना है ना. मेमोरी बोला तो फिर 0 to 1 दिखाने का. आर यू गेटिंग इट? आईओ नहीं दिखाने का ना. या ना m/io bar दिखाने का. बट यहाँ पे जस्ट सिंगल आएगा, ऐसा बस नहीं आएगा. मतलब ऐसे आएगा. देख इफ स्पेसिफिकली दे आस्क मेमोरी रीड. ठीक है. तो m/io bar सिग्नल तुझे दिखाना है बट m/io bar ऐसे जाएगा. यस. Getting it? If they ask for the IO read, then you have to show that m/io bar ऐसा. अब इधर मैंने ऐसा कंबाइन दिखा है. समझ में आ रहा है क्या? यस. तो डिपेंडिंग ऑन जो भी आपको करना है. मेमोरी रहेगा तो फिर लो सिग्नल ले, इधर 10 पे लिखा है. एंड अगर IO सॉरी मेमोरी रहेगा तो हाई सिग्नल ले, एंड अगर IO रहेगा तो लो सिग्नल ले. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? सो दिस इज द सिग्नल व्हिच हैव टू स्प्लिट डिपेंडिंग ऑन मेमोरी क्या IO है. नाउ दिस इज द कंबाइनिंग फॉर मेमोरी एज वेल एज IO. फाइन, अंडरस्टूड? यस. ठीक है. देन उसके बाद DT/R बार. ठीक है. DT/R बार. अभी रीड करना सॉरी राइट करना है. राइट करना मतलब ट्रांसमिट करना है कि रिसीव करना है? ट्रांसमिट. या ट्रांसमिट करना है. सो दिस सिग्नल शुड बी व्हाट 1 और 0? 1. या ठीक है. सो मैंने 1 किया. इवन इधर ये 1 सिग्नल जा रहा है. समझ में आ रहा है? इट इज गोइंग 1. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. एंड वी हैव सीन दैट DT/R बार को तब तक नहीं है जब तक DN बार अच्छे से मतलब जो वैल्यू वो नहीं रहता. ठीक है. So we have to show the DN bar. So DN bar will be applicable when DN bar means what is active low signal. Ready? And this is what we have to activate below data because data enable करना है ना, address नहीं. Is the data enable? So where the data is there तो उसके नीचे अपने को इसको 0 करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? DN bar is getting low just below data. So keep in mind right bar and DN bar they must go 0 below this data only. उसके पहले नहीं करते. क्यों समझा ना? बस मुझे एड्रेस राइट नहीं करना, डेटा राइट करना तो इधर जाएगा. ठीक है. मुझे अनेबल किसको करना? डेटा को, एड्रेस को नहीं. सो दैट्स व्हाई DN बार भी यहाँ पे लो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग इट? हैव यू अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है. नाउ वन क्वेश्चन टू यू. नाउ व्हाई दिस DT/R bar is going 1 in this T1 slot? Because this is also once again going to handle with the data na, or going to deal with the data DT/R bar.
ठीक है. सो इट मस्ट आल्सो गो हाई इन दिस T2 साइकिल, मतलब जहां एड्रेस खत्म हो रहा है उधर जाना चाहिए था, बट उसको वो पहले से हाई हो जाता है. क्यों? कैन एनीवन आंसर? सर उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता है ना, क्यों इफेक्ट क्यों नहीं है? गुड वन, बट क्यों नहीं है इफेक्ट? इसे डीएन जब तक चालू नहीं होगा वेरी तब गुड, तक। वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट. समझो अभी क्या कर रहे हैं. ठीक है. नाउ व्हाई दिस म्यूपी मेक्स इट DT oblique R bar हाई? बिकॉज कैसे बताए? बिकॉज एक्चुअली देख कैसे चाहिए, DT oblique R bar यहाँ पे हाई होना चाहिए, और वो पहले से हाई करके रखते हैं. क्यों? बिकॉज डिले बचाने के लिए. डिले मतलब कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ दिस DT oblique R bar विल बी फंक्शनल व्हेन D bar इज इन 0 ना. जब तक ये 1 है, इसको एक्चुअली मीनिंग ही नहीं है, बट ये 0 का फटक से एक काम में आएगा, ये एक्टिव में आएगा, और वैसे तो फंक्शन में आएगा. समझ में? जैसे मैंने बोला था दिस वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये डिले बचाने के लिए रहता है. कैसे पता है? लेट्स सपोज एक क्लासरूम है. समझा? जैसे भी एग्जांपल तो मैंने बोला था डीएन बार इज मेन स्विच. लेट्स सपोज यहाँ पे मेन स्विच है, और ये क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के बाहर मेन स्विच है, और यहाँ पे सब सब स्विच है, इधर फैन एंड लाइट के वगैरह. ये क्लासरूम है, इधर सब फैंस वगैरह जो भी है. आर यू गेटिंग? इधर लाइट्स वगैरह है. समझो. ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इज दैट, मतलब व्हाट इज दिस डी. नाउ दिस इज व्हाट DT oblique R bar एंड दिस इज द DN bar. ठीक है. अभी समझो. ठीक है. अगर मुझे लेट्स सपोज क्लास में कोई नहीं है, तो सब बंद रहेगा. फाइन. नाउ लेट्स सपोज क्लास में कुछ हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्लास में है कोई, मतलब क्लास में अलग, लेट्स सपोज क्लास वगैरह चालू होने वाला है. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट क्लास वगैरह चालू वाला है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मतलब लेट्स नॉर्मल प्रोसीजर. ठीक है. मैं पहले मेन स्विच ऑन करूंगा. फाइन. मेन स्विच ऑन किया, उसके बाद मैं अंदर जाएगा, एक एक बटन चालू करेगा, तो लाइट फैन ऐसा ऐसा चालू होते जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. नाउ बट लेट्स सपोज आई जस्ट वांट टू व्हाट यू कैन से दैट रिड्यूस द डिले, मतलब जो लाइट फैन चालू होने का डिले, उसको मुझे एक एक बटन जो मैं प्रेस करते जाएगा, बिकॉज मैं भी यार ह्यूमन हूं, एक एक को मुझे प्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा डिले जाएगा. गेट, मतलब कम से कम कुछ मिली सेकंड में तो डिले जाएगा ही जाएगा. ठीक है. एंड माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल में मिली सेकंड में काउंट होता है. फाइन. सो मतलब इसको एक एक को टाइम जाएगा मेरा. सो नाउ लेट्स सपोज इफ आई जस्ट रिड्यूस द टाइमिंग, तो मैं क्या करूंगा? सर इफ यू अंदर वाले रिड्यूस द पहले टाइमिंग. चालू, सॉरी. अंदर वाले पहले ही चालू कर सकते। या ठीक है. मतलब अभी मैं क्या करूंगा, जब मतलब मुझे प्रीवियस वाला क्लास जाएगा, तो उस टाइम में मैं क्या करूंगा, ये अंदर वाले बटन चालू ही रखूंगा. अंदर वाले बटन चालू ही रखेगा. ठीक है. बाहर मेन स्विच ऑफ है ना, मतलब बाहर मेन स्विच ऑफ है, ये अंदर चालू है, कुछ मीनिंग है क्या उसको? एक्चुअली नहीं, बट वेन एवर आई जस्ट टर्न ऑन दिस मेन स्विच, ये फटाक से सब चालू हो जाएंगे विदाउट डिले. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, स्पेशली गर्ल्स? यस सर। ओके. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. सो DN1 मैंने पहले से ऑन किया, इसका मीनिंग नहीं है, मतलब दो वी हैव जस्ट मेड इट ऑन, इसको मीनिंग है, बट जैसे में मेन स्विच ऑन करेगा, फटाक से एक्शन में आएगा, तो फिर से उसको हाई करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से आए फटाक से काम करना चालू करेगा. तो जस्ट अवॉइड दैट डिले दैट म्यूपी मेक्स दैट DT oblique R bar हाई इन T1 सेट ओनली. समझ में आ रहा है क्या? आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है. सो दैट इज द डायग्राम और टाइमिंग डायग्राम फॉर द मिनिमम मोड. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है. नाउ टेल मी, सॉरी, मिनिमम मोड का राइट. फाइन. नाउ यू टेल मी. Now, if I want to go for that memory read वाला thing, मैं ये मेमोरी राइट के लिए. ठीक है. अब मेमोरी रीड करना है मुझे, तो चेंजेस क्या आएंगे? मेमोरी रीड इन मिनिमम मोड. जिस मेक में दिस WR बार से या. ठीक है. हाँ अभी बोलो. मुझे मेमोरी रीड करना है, तो चेंजेस क्या आएंगे? ए चेंज होगा? नहीं नहीं, नहीं. ए नहीं रहते. ठीक है. हाँ. BH ऑब्लिक S7 इसमें कुछ नहीं. चेंज आएगा इधर? सॉरी. नहीं. नहीं. ठीक है. AD0 to AD15 यहाँ पे चेंज आएगा नहीं. कुछ? पहले एड्रेस जाएगा, उसके बाद डेटा ना. हाँ. रीड मतलब क्या? वन सेकंड, विल गिव एड्रेस एंड उसके बाद विल गेट अ डेटा ना. फाइन. ओके. यहाँ पे क्या आएगा इंस्टेड ऑफ दिस रीड बार, सॉरी राइट बार? RD बार। RD बार. यस. इंस्टेड ऑफ दिस राइट बार, नाउ यू हैव टू जस्ट शो द RD बार बिकॉज़ द मेमोरी रीड. समझो गर्ल्स एंड एनीवन, मतलब इफ यू आर हैविंग डाउट देन प्लीज आस्क. ठीक है. यस. विल देयर बी एनी चेंज इन दिस वन? सर तो फिर राइट बार 1 रहेगा ना? या राइट बार 1 रहेगा उस टाइम पे. इफ यू टू शो द राइट बार, तो राइट बार 1 दिखाएगा. परफेक्ट. ठीक है. एंड however here will it be any change? नहीं सर, हाई रहेगा। Okay. DT oblique R bar? नहीं. सर रिसीव के लिए फिर 0 होगा। या अब मेमोरी रीड मींस व्हाट? रिसीव. तो DT oblique R bar इधर हाई नहीं रहेगा, ये लो रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? You have to show this low.
गेटिंग इट, ठीक है, दिस विल बी द लो नाउ एंड dn बार सेम। सेम ऐसे, ठीक है, इज एवरीवन गेटिंग इट? तो चेंजेस यहाँ पे आएंगे, राइट बार दिस वन, ओके, ये वाला सिग्नल, फिर उसके बाद dn ऑब्लिक dt ऑब्लिक r बार, ये दो सिग्नल चेंज हो गए। इंस्टेड ऑफ दिस राइट बार वी विल हैव अ रीड बार एंड इंस्टेड ऑफ दिस dt ऑब्लिक वी विल हैव दिस वन ओनली, बट दिस इज गोइंग टू बी द जीरो बिकॉज़ वी आर एक्चुअली रीडिंग इट, ठीक है। अब और एक चेंज आएगा, कैन एनीवन टेल मी? और एक चेंज आएगा, समझो अभी, और एक चेंज आएगा, समझो अभी लॉजिकली, और एक चेंज आएगा, कैन एनीवन जस्ट मेक, कैन एनीवन जस्ट नोटिस, और एक चेंज क्या आएगा? एनीवन नो? इट्स अ मेमोरी रीड, इट्स नॉट मेमोरी राइट, समझो। चलो आई विल जस्ट गिव द एग्जांपल, ठीक है, मेमोरी राइट करना है, राइट कौन करने वाला है? यूपी। या ठीक है, सो म्यूपी क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल सर्च, मतलब पहला एड्रेस जाएगा, देखेगा किधर है वो लोकेशन, किधर है वो लोकेशन, किधर है वो लोकेशन, जैसे ही लोकेशन मिला फटाक से डेटा लिख देगा। व्हाई फटाक से? because MUP know now what to write. Are you getting it? Because MUP is going to write and MUP knows what to write. Okay, so as soon as we get that address patak say within a fraction of a second or immediately we just write the data. Getting it? Okay, so that's why you can see over here, you can see over here यहाँ पे यार किधर गया share, yeah, you can see over here, sorry आपको मिल गया आंसर, किधर गया डायग्राम यार, oh, you can see over here. Here we are having just like मतलब जैसे एड्रेस खत्म होगा फटाक से we are starting data, ठीक है। But if I say read, do we have data immediately available with the MUP? नो। Because read डिले से के मतलब, साथ। because read मतलब क्या, डेटा लाइन पे कुछ नहीं, डेटा मेमोरी से आने वाला है, जैसे एड्रेस का उसके बाद ढूंढेगा, रीड करके अरे हाँ डेटा क्या, बाद में इट विल कम ऑन डेटा लाइंस ना। आर यू गेटिंग इट? समझो समझो, फील करो, मेमोरी राइट मतलब व्हाट, म्यूपी वांट टू राइट से म्यूपी को पहले से पता है डेटा लिखना क्या है, सो व्हेनेवर वी गेट दैट एड्रेस फटाक से लिख देगा वो। आर यू गेटिंग इट? बट व्हेनेवर वी वांट टू रीड इट, मुझे पता नहीं उधर क्या लोकेशन पे डेटा है, आई रियली डू नॉट नो, जब मैं जाएगा उधर रीड करेगा तब मेरे को समझेगा। गेटिंग इट? सो फॉर मेमोरी रीड व्हाट वी विल डू इज दैट we will go to the memory, we will search for the location किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है करके, and जैसे ही मिला we will read that data, and read करने के बाद डेटा लाइन पे लोड करेंगे। मतलब क्या, वो रीड और डेटा लाइन पे लोड करने में टाइम जाएगा, एंड अगर टाइम जा रहा है तो दिखा, बिकॉज ये टाइमिंग डायग्राम है। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग इट? देयर विल बी सम टाइम, मतलब इट विल टेक सम टाइम, एड्रेस का फटाक से डेटा नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टू रीड एंड देन यू हैव टू प्लेस इट ऑन डेटा लाइन, ठीक है। व्हाइल राइट में मुझे पहले से ही पता है लिखना क्या, डेटा लाइन में पहले से जैसे ही एड्रेस का मुझे फटाक से लिखना है। But in read operation, we do not know what we have to, or what is the data to be read. ठीक है, so that's why read operation कैसे होगा? Let's see. Read operation, here there will be the float. You can see over here. Getting it? यहाँ पे float रहेगा. I hope you are getting it. So जैसे एड्रेस में फटाक से डेटा नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एंड अगर टाइम जा रहा है तो दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये टाइमिंग डायग्राम है, प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, so here there will be the float for some time and then we will get a data. ठीक है, and right में we do not have float because immediately we will transfer because we know what to write. जैसे एड्रेस मिलेगा लोकेशन में आप फटाक से डेटा लिख देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक है, सो एज आई टोल्ड, मेमोरी रीड में चेंज किया, सिंपल, ये सब सेम रहेगा, इधर ये फ्लोट आएगा, इधर रीड बार आएगा, और ये dt ऑब्लिक r बार लो हो जाएगा, सिंपल, फाइन। सो दैट इज द टू डायग्राम वी हैव सीन, एक्चुअली फोर डायग्राम, मेमोरी रीड, IO रीड, मेमोरी राइट, IO राइट, दिस आर द फोर डायग्राम वी हैव सीन। अंडरस्टूड? किसी को भी कुछ भी डाउट? सर हाँ बोल। तो वो D0 to D15 के बाद में वो ऐसा बंद क्यों हो रहा है लाइन? हाँ, बिकॉज मतलब इधर डेटा रीड हो जाएगा ना पूरा, मतलब खत्म भी होता है ना ऑपरेशन वो। गेटिंग इट? मतलब T4 तक वो सब खत्म हो जाएगा, डेटा रीड किया, T4 तक डेटा अपना जिधर भी एक्यूमुलेटर वगैरह जिधर भी डालना था उधर डाल दिया, खत्म, तो उसके बाद फिर से डेटा फ्री हो गया। गेटिंग इट? ये फ्री हो गया, मतलब इसका मीनिंग होता है फ्री हो गया ये। नाउ दे कैन टेक एनी अदर वैल्यू। गेटिंग इट? दे रेडी फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन और नेक्स्ट वैल्यू। अंडरस्टूड? फिर सर T5 में फिर वापस ALE हाई होगा? हाँ, उसके बाद T4 के बाद फिर से एरिया हाई होगा नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, समझा? अब ये एक मेमोरी रीड खत्म हो गया, जैसे उसके बाद मुझे IO राइट करना है, तो उसके लिए फिर से नेक्स्ट ऑपरेशन चालू होगा अब इधर से। गेटिंग इट? यस।
Okay. Now, सर so this IO is for रीड में भी yeah. ऐसा डिले हाँ, आएगा बोल। ना? क्या IO क्या? रीड हाँ मेमोरी रीड दोनों में डिले आएगा ना? हाँ, रीड दोनों में डिले आएगा। रीड में हर एक चीज में रीड में डिले आएगा। फाइन, ठीक है। सो दिस इज फॉर व्हाट? मिनिमम मोड। नाउ वी विल सी फॉर अ मैक्सिमम मोड। अब मैक्सिमम मोड में जो सिग्नल चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, बिकॉज वो सिग्नल्स 8 to 8 से आते हैं। लेट्स सी मैक्सिमम मोड में देखो चेंजेस क्या सिंपल है। रीड मोड, मैक्सिमम मोड में रीड वी आर सीइंग, ठीक है, मेमोरी रीड एंड आईओ रीड एक साथ में मैक्सिमम मोड में। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो ये क्लॉक 40 से, ठीक है। उसके बाद एरिया हाई रहेगा। कीप इन माइंड एरिया दिया किसने? एरिया दिया किसने? बस कंट्रोल है। बस कंट्रोल 8 to 8 दी है, ठीक है। तो वो एरिया। उसके बाद नाउ इन दिस वन इज द मैक्सिमम मोड, सो वी हैव टू शो दिस वन S2 बार, S1 बार, S0 बार। दैट इज इंपॉर्टेंट। You have to show this S2 बार, S1 बार, S0 because मैक्सिमम में यही लोग हैं जो कंट्रोल सिग्नल वगैरह जनरेट करना है, तो ये लोग चाहिए मुझे, ठीक है। So I'm showing S2 S1 बार, S2 बार, S1 बार, S0 बार and they will take the appropriate value। इसका मीनिंग वो होता है, अगर वो बॉक्स में लिखते हैं ना अपन, that is they will be taking appropriate value, ठीक है। उसके बाद अपने रोज के सिग्नल BH1 ऑब्लिक S7 N into S6 जो भी है, ठीक है। तो जब एरिया हाई रहेगा तो BH वगैरह जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, ठीक है। देन AD0 to AD15। सो जब एरिया हाई है तो एड्रेस जाएगा, अगर रीड है तो फ्लोट आएगा, उसके बाद डेटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी विल हैव इधर मेमोरी रीड और आईओ रीड। ये सिग्नल अलग है, मेमोरी रीड कंट्रोल एंड आईओ रीड कंट्रोल। वी जस्ट राइट लाइक कंट्रोल ओवर हियर टू शो दैट दे आर मैक्सिमम मोड का सिग्नल्स। फाइन, वी जस्ट से दैट मेमोरी रीड कंट्रोल एंड आईओ रीड कंट्रोल, ऐसा लिखते हैं अपन। So depending on whatever the cycle is, if it is a memory read ये ऐसा जाएगा, and अगर IO read रहेगा तो फिर ये नाम चेंज करना, बाकी कुछ नहीं करना। Keep in mind we do not have m/IO bar in maximum mode. Do not show m/IO bar. ठीक है, that's why we are having this separate signal which is generated by the decoder. Sorry, not decoder, bus controller 8 to 8. Keep in mind once again, don't show m/IO bar because m/IO bar signal है ही नहीं, और वो 8 to 8 जनरेट भी नहीं करता। It generate directly that memory read, memory write, IO read. Understood? समझो कौन से सिग्नल है। सो मेमोरी नहीं तो आईओ रीड, डिपेंडिंग ऑन कौन सा अपन रीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद DT ऑब्लिक आर बार, ये वो 8 to 8 ने जनरेट किए, तो DT ऑब्लिक आर बार का अगर रीड है तो पहले से रो हो जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर चेंज, DEN इज नॉट DN बार। 8 to 8 जनरेट DN इज डजंट, इट डज नॉट जनरेट DN बार। तो मुझे DN लिखना है, DN बार नहीं लिखना है मैक्सिमम मोड में। एंड उसको जो भी डेटा है उसके नीचे 1 करना है, उसको नॉट करके अपन 0 करने का काम करेंगे, वो अलग चीज है, बट एक्चुअली इट इज गोइंग टू जनरेट द DN। And DN we have to show it high, do not show low. Try to understand the difference in minimum and maximum. Changes are like here we are having that S2 bar, S1 bar, S0 bar, which was not there. Then here we are having MD memory read to IO read, okay. Second, we do not have m/IO bar, and third thing here this DN, we do not have DN bar, we have DN over here. Understood? Understood the thing, everyone? सर हाँ बोल। सर वो S0 S1 S2 बार वो मतलब ऐसा वो क्रॉस बॉक्स में रहना चाहिए ना? वेरी गुड, परफेक्ट, ये मैं क्वेश्चन पूछने वाला था आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आई विल कम टू दैट। अच्छा हुआ, चल किसी ने तो पूछा, अदरवाइज मैं इसको छोड़ने वाला था ये पर्टिकुलर डाउट को। तो इसको मतलब आई वाज लाइक अगर किसी ने पूछा तो ठीक है मैं बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा। गुड, वेरी गुड। हर एक चीज के पीछे रीजन है में, तू जितना पूछेगा उतना मैं बताएगा, ठीक है। चल लेट इट बी, पहले ये सब क्लियर करो। सो फर्स्ट एरिया आ जाएगा, देन यू हैव टू शो दैट S2 S1 S0। हां ये यू कैन सी, बाकी सब मैंने ऐसा क्रॉस में दिखाया है, इसको मैंने क्रॉस में नहीं दिखाया है, समझो, ठीक है। इसका मैं इसका आई विल जस्ट टेल द आंसर। फर्स्ट वन यू हैव टू थिंक एंड देन आई विल जस्ट टेल द आंसर, ठीक है। देन यू हैव टू शो द BH1 oblique S7 and lines, then AD0 to AD15। here we are having memory read and IO read control directly, we do not have to show that m/IO bar separate and read bar separate, we are having that signal readily available, ठीक है। then do not show that m/IO bar, then DT oblique R bar read करना तो लो जाएगा, and we are having DEN, it's not DN bar। I hope you understood, ठीक है। now tell me the changes for the memory and IO write, पहले वो देखते हैं। चेंजेस बोलो मेमोरी एंड आईओ राइट मैक्सिमम मोड के लिए क्या आएगा? कम ऑन, एंड इफ एनी गर्ल्स आंसर देन आई विल बी हैप्पी, इफ एनी गर्ल आंसर देन आई विल बी हैप्पी फॉर राइट ऑपरेशन। DT/R बार हाई होगा। या एनी गर्ल वांट टू आंसर प्लीज? एनी गर्ल, if you answer I will be happy. What changes will be there in a right cycle? They're easy. Are you there, girls? At least say yes. Yes, sir. Okay, if you can answer I will be happy, I will be on the 7th cloud. Any girl want to answer?
क्या चेंजेस आएंगे इस डायग्राम में फॉर राइट पर्पस, फॉर मेमोरी एंड आईओ राइट इन मैक्सिमम मोड, क्या चेंजेस आएंगे? एल ही चेंज होगा गर्ल, will be there changes in ALE? Yes or no? Gus, you are disappointing me, yaar. Okay, fine. Yeah, boys, come on, answer. No. उनसे No. नहीं हो पा रहा है. No. Yeah, ठीक है. Then this S2 S1 S0 Same. same. This will be associated. This will be here here here. Float नहीं आएगा. Yeah, float नहीं आएगा because once again it's the right operation. There is a new mode and maximum mode. Right करते UP knows the data, फटाक से लिख देगा वो. There won't be any delay. Read करने का उसको मतलब वो टाइम नहीं देने की जरूरत है. ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा? Right आएगा रीड की Yeah, जगह memory पे. right and IO right. This will हाँ. be this signal goes DT रिसीव ट्रांसमिट करेगा पहले. transmit मतलब what this must go वन high. Yeah, this और will go फिर high. लो ठीक और है. डी So this is सेम. how we do. Yeah. Now come to this question. ये वाला particular question. This one. Why we have shown that S2 S1 bar like this one? हर एक चीज के पीछे रीजन है. ठीक है. We are not shown like this box. ऐसा क्रॉस वाला बॉक्स नहीं दिखा है, ऐसा ही दिखा है. Can anyone answer me? Can सर anyone क्योंकि just वो एक्टिव लो है ना, sorry? तीनों एक्टिव लो है ना, तो कौन है ये मैं सर. बंदा? एक मिनट है, just let me just come to you people. Who has answered this one? Rajesh. यस सर. अरे वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट. दे आर एक्टिव लो एक्चुअली. ठीक है. सो कीप इन माइंड व्हाट आर द सिग्नल्स आर जो भी था, अदरवाइज AD0 टू AD19 वगैरह. ठीक है. सो दे में टेक 01 01 01 कुछ भी रह सकता है उसके ऊपर. सो दैट्स व्हाई इनिशियली वी आर शोन लाइक दिस वन. मतलब दे में हैव एनी वैल्यू एंड उसके बाद वी आर चेंजिंग. सो दिस इज व्हाट चेंज, दिस इज व्हाट अ चेंज. ठीक है. So initially they may have some values on it and then we are changing to whatever we want. So that is what changes over here. ठीक है. But like in case of S2 bar, S1 bar and S0 bar, before starting the operation I want they to be inactive. मतलब कुछ काम मत कर पहले मेमोरी वगैरह. जब मैं बोलूंगा तभी मतलब you have to take the signals. ठीक है. And they will be inactive when they are 1. Are you getting it? So initially all will be 1 and उसके बाद they will take a proper 1 and 0. Are you getting it? It's not कि initially they will be like either 1 or 0. Either 1 or 0 का मीनिंग क्या होता है? वो कुछ तो काम कर रहे हैं. तो मेमोरी नहीं तो मेमोरी राइट वगैरह कुछ तो. ठीक है. नहीं मींस इफ यू हैव टू डू एनी ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इट आइडियल. तो वो 0 होने मतलब इनएक्टिव होने चाहिए और उसके बाद वी कैन जस्ट परफॉर्म आवर ऑप्शन. आर यू गेटिंग इट? So that's why though they are active low, so that's why initially they will be the high, मतलब कुछ नहीं कर रहे, inactive है. And after that they will take a proper 0s and 1. ये इसका मीनिंग है proper 0s and 1 लेंगे वो. समझ में आ रहा है? And काम होने के बाद फिर से active लो. और that's why we are shown like this one. ये ऐसे दिखा दे, अपन ऐसे नहीं दिखाते. समझ में आ रहा है क्या? इसका मीनिंग है उसके बाद वो 0 and 1 कुछ भी हो सकता है, बट इधर नहीं, इन केस में नहीं. अगर काम है तब तक 0 and 1 रहो and उसके बाद just 1 रहो, एक्टिव हाई. सॉरी नॉट एक्टिव हाई, हाई रहो. ये बिकॉज़ दे आर द एक्टिव लो सिग्नल्स. अंडरस्टूड? सर लेकिन वो जब भी 0 है तभी हाँ. उसका मतलब तीनों सिग्नल 0 बता रहा है ना ये केस में तो. नहीं नहीं नहीं, ये तीनों सिग्नल 0 नहीं, डिपेंडिंग ऑन मतलब व्हाट दैट वी वांट टू डू. दे विल टेक अ 0s and 1 बिकॉज़ ये सब ब्रैकेट में इधर दे विल टेक 0 और 1. समझा क्या? आर यू गेटिंग इट? सर तो वो उसके जगह पे वो क्रॉस बॉक्स दिखाने में क्या प्रॉब्लम था? ये देख S2 S1 S0 मींस व्हाट. अभी ये बॉक्स में मतलब क्या, इधर दोनों भी लेवल है ना, 1 लेवल भी और 0 लेवल भी. आर यू गेटिंग इट? सो अगर मेमोरी रीड रहेगा तो मेमोरी रीड का अपन ने देखा है किधर है वो टेबल या मेमोरी रीड. अब मेमोरी रीड के लिए कॉम्बिनेशन क्या, किधर है मेमोरी रीड? हाँ मेमोरी रीड. तो 1 0 1. सो S2 will take 1, S1 bar will take 0 and S0 will take 1. समझ में आ रहा है क्या? So that's why we show like this one. तो depending on 0 से 1 आपको लेना है and काम होने के बाद फिर से बंद करना है ना अपने को. मतलब काम होने के बाद we want it to be the 1. ये 0 नहीं चाहिए मुझे एक भी इसमें से. समझ में आ रहा है? ठीक है. अंडरस्टूड? सर वो काम कभी करना चाहिए, कौन से स्टेट में करना, वो वापस टाइमिंग डायग्राम खुल T3 तक T3 तक अपना काम हो जाता है. समझ में आ रहा है क्या? सर बिकॉज तो हियर भी मतलब देख वो अपन कैसे एक सिंगल लाइन ही ऐसे देख. हाँ बोल. T1 में जब भी चालू हो रहा है मतलब लो हाँ. जा रहा है तभी मतलब वो फंक्शन कर रहा है ना. यस, अभी ये इधर फंक्शन है T1 में, फंक्शनिंग चालू हो गया उनका. एक्चुअली यहाँ से होना चाहिए था एट दिस T1 का पहला एज, और प्रैक्टिकली थोड़ा डिले, थोड़ा सा टाइम के बाद होता है वो. अंडरस्टूड? समझा कि और कुछ डाउट है? सर वही कि
वहाँ पे क्रॉस बॉक्स का क्रॉस तो ये कभी नहीं होगा, बिकॉज क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, दे आर टेकिंग zeros and one value. No, cross means what? That S2, S1, S0 will be either 0 and 1. But initially I want all of them to be inactive. हाँ सर, And उसके बाद inactive, में उसके बाद में भी इनएक्टिव होगा ना, इसके खत्म होने के बाद, नहीं काम खत्म नहीं, होने के यहाँ बाद इनएक्टिव है। T1 हाँ में जब भी लो जा रहा है वो टाइम पे हाँ, क्रॉस बॉक्स स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। या एक्चुअली यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए बोला है ना तू। नहीं नहीं, वो जब भी लो जा रहा है T1 में, हाँ तो वो हाँ, पूरा लो जाने की जगह पे वो टाइम पे क्रॉस बॉक्स स्टार्ट होना चाहिए, जैसे नीचे हुआ है ना। अरे नहीं यहाँ क्रॉस नहीं आएगा, अरे यहाँ ऐसे आएगा, देख ये ऐसे है ना, पहले वन, तो वन मतलब व्हाट दिस बॉक्स इंडिकेट, ये बॉक्स मतलब क्या रहता है पता है, इसमें वी आर हैविंग वन एज वेल एज जीरो लेवल, हाँ सो तो दैट सर अंदर जो एस बेसिक जीरो बस है एस वन S2, एस जीरो एस वन सॉरी, एस टू तीनों दिखा रहे हैं ना, हाँ, तो वो उनमें से कोई एक वन भी रह सकता है, कोई एक जीरो भी रह सकता है, यस यस यस, तो ये क्रॉस बॉक्स दिखा सकते हैं। नहीं ना क्रॉस नहीं देगा ऐसा, मतलब इसका मीनिंग ही क्या, ये बॉक्स का इसका भी मीनिंग क्या, इधर ये वन लेवल, इधर जीरो लेवल है, समझ में आ रहा है क्या, ये तेरा वन है और ये तेरा जीरो है, तो S2, S1, S0 दे विल टेक अप्रोप्रिएट वैल्यू, समझा। पर उसके लिए तो ये ऐसा क्रॉस की जरूरत नहीं है, जैसे बॉक्स होना चाहिए जिसमें दोनों भी लेवल है, वन एज वेल एज जीरो, अंडरस्टूड, ये बॉक्स में है ना दोनों लेवल, समझा क्या, कि स्टिल डाउट, अंडरस्टूड, Yes, sir. ओके। सो बॉक्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब दे विल इधर टेक जीरो एंड वन डिपेंडिंग ऑन अदर कंडीशन, मतलब उनको जो लेना है, ठीक है, अदरवाइज यू मे शो लाइक दिस वन, S2 बार सेपरेट, S1 बार सेपरेट, S0 बार सेपरेट, खत्म, पहले वन तो वन ही रहेगा, मतलब इनिशियल दे विल बी द वन, समझ अभी कैसे कंबाइन करने के बाद ऐसा क्यों, इनिशियल दे विल बी द वन, ठीक है, उसके बाद जैसे वो मेरा S2 बार मैंने वन देखा तो ये वन ही रहेगा, S1 बार मेरा जीरो है तो फिर ऐसे ही जाएगा, एंड S0 बार वन है तो ऐसे ही जाएगा, अब इन तीनों में कंबाइन करेगा तो कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना, समझ में आ रहा है क्या, आर यू गेटिंग इट, was हाँ initially yes. there will be the one only, समझा, हाँ, now whatever we have seen that for AD15 to AD0 वगैरह, अब AD A15 लाइन पहला वन भी हो सकता है और उसके बाद उसको ले सपोज जीरो ले लें, सर एक ठीक है, मिनट को A14 लाइन रुक, पहले A14 लाइन पहले जीरो हो सकता है, उसका उसको वन भी लेना है, ठीक है, देन A13 लाइन है, उसको पहले वन था उसके बाद भी उसको वन ही लेना है, A13 लाइन जीरो था उसको फिर से जीरो ही लेना है, तो इफ आई जस्ट कंबाइन ऑल दिस थिंग दे विल कम लाइक दिस वन, समझा, सर वो बट यहाँ पे इनिशियली देयर हैज टू बी वन, या बोल अभी, टाइमिंग डायग्राम दिखाना ना। बोल फटाफट, हाँ सर, इसमें वो ऊपर का जो लाइन है ना वो विजिबल नहीं है, इसलिए मेरे को डाउट था। अच्छा ये ऊपर वाला लाइन हाँ है, ये दिख सॉरी सॉरी यार, ये बॉक्स से पूरा मतलब ये लाइन है वहां पे, हाँ समझो ऐसा नहीं है कि वो लाइन नहीं है, दैट इज तीनों के दिन जीरो नहीं हो सकते, तो जीरो का मतलब जैसे वो एक ही कुछ इंस्ट्रक्शन पेज वगैरह वही होगा, सर से दे सर विल बी इधर जीरो एंड वन, समझा, फाइन, अंडरस्टूड नाउ, यस सर। ओके, सो वी हैव डन, सर सॉरी, सर ये T3 साइकिल तक क्यों लेता है इतना, या S0 S? मोस्टली T3 साइकिल तो जाता है, एक्चुअली T3 में खत्म होना चाहिए एक्चुअल में कौन सा भी काम, बट थोड़ा सा T3 में भी पेनिट्रेट करते हैं थोड़ा, समझा, एक्चुअल आइडियली T3 में सब खत्म होना चाहिए, बट T3 में होता नहीं, इट रिक्वायर वन मोर साइकिल, T4 में पक्का खत्म हो जाता है, फाइन, Yes, sir. okay, so that is all regarding the minimum mode and maximum mode. We have seen the configuration, we have seen how that extra chips we have to add, and we have seen the timing diagram also. Any doubt in this, because we have seen a lot of two huge diagrams, and उसके बाद फिर से ये 8 timing diagrams, and we have seen each and every वो चिप का फंक्शन, क्लॉक जनरेटर करता क्या है, लैच क्या करता है, ट्रांजिस्टर क्या करता है, डिकोडर क्या करता है, बस एनकोडर क्या करता है, बस डिकोडर, सॉरी, head to head. Any doubt so far? Any doubt? I hope it is not to anyone.